एवलॉन टेक्नोलॉजीज ये है कंपनी जो बाजार का जल्द हिस्सा बनेगी क्योंकि इसका आईपीओ आ रहा है। FY24 का पहला आईपीओ ये होने वाला है। अगले हफ्ते 3 तारीख को ये आईपीओ खुलेगा। 3 से 6 अप्रैल के बीच ये आईपीओ खुला रहेगा। पहले मैं आपको इशू की थोड़ी डिटेल्स दे देता हूं, फिर कंपनी क्या करती है उसके बारे में भी जान लेते हैं। 3 से 6 अप्रैल के बीच इशू रहेगा। 415 से 436 का प्राइस बैंड है। कुल 865 करोड़ का आईपीओ जिसमें ऑफर फॉर सेल के जरिए कंपनी 545 करोड़ के शेयर्स भेजेगी। प्रमोटर्स यहां पर अपनी शेयर होल्डिंग कम करने जा रहे हैं। प्री इशू 71% की शेयर होल्डिंग, पोस्ट इशू करीब 51% की रह जाएगी। एवलॉन टेक्नोलॉजीज, इस कंपनी के बारे में भी बता दूं, 3 नवंबर 1999 में कंपनी ने कामकाज की शुरुआत करी थी। बॉक्स्ड बिल्ड सॉल्यूशंस देने में एंड टू एंड ऑपरेशंस वाली ये फुली इंटीग्रेटेड ईएमएस कंपनी है। पीसीबी डिजाइन असेंबलिंग से लेकर बॉक्स बिल्ड बनाने तक पूरा प्रोडक्ट सॉल्यूशंस देती है। कई सारी ग्लोबल कंपनीज इनके क्लाइंट्स हैं। बड़े यूएसए, चीन, नेदरलैंड्स, जापान की ओईएम्स के साथ इनका कामकाज चल रहा है और अच्छा खासा क्लाइंट बेस भी है, अच्छा खासा कारोबार भी है। आज 2 गेस्ट जुड़ रहे हैं कंपनी की तरफ से। कुन अहमद बीचा साहब जो कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, प्रमोटर भी हैं कंपनी के। पीएचडी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री ली है। विचिटा स्टेट यूनिवर्सिटी से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग साइंस की डिग्री मास्टर्स की ली है और साथ ही कई सारे बड़े अवार्ड्स इंडस्ट्री के जीत चुके हैं। और साथ ही RM सुब्रमण्यन साहब जो कि कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं। बिट्स से सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री ली है। IIM बैंगलोर से मैनेजमेंट में पीजी डिप्लोमा भी सर ने किया है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जी बिजनेस पर बात करने के लिए। कुन अहमद बीचा साहब, आपसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा। थोड़ा कंपनी के बारे में बताएं सर, क्योंकि आपने कंपनी की शुरुआत भी करी थी, प्रमोटर हैं, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ये बॉक्स सेट सोल्यूशन होता क्या है, क्या कामकाज करती है सर आपकी कंपनी? Thank you. So हम क्या करते हैं ना, we are completely a box build solution in clean energy, in primarily focused on solar, hydrogen, and EVs. We also do a lot of work in mobility, a lot of work in railway signaling. We make parts for aircraft inside the aircraft, in the cabin, as well as in the engine. So we are very well diversified, and we have a portfolio of industrial, which is our largest base today, and telecom. So very well diversified, vertically integrated. We not only do PCB assemblies, we also do our own sheet metal, plastics, cables in our different factories. The biggest difference among peers in India, we started in the US and started in India in 1999. So we have factories both in US and in India. So customers can start their production in the US and migrate to India in a few months. So that model has been working very well for us. And the focus on clean energy, which is a sunrise industry across the world, as you know, our orders from that area has been booming for us. And we believe that the manufacturing in India, which we've been doing for the last 22 years, is where our success is going to be. And today is the time where India as a manufacturing base is looked on to succeed by countries all over the world, and companies globally is looking at India to succeed, and we stand in the forefront to lead that. चलिए सर, बहुत बढ़िया बिजनेस भी समझाने के लिए। 865 करोड़ रुपीस का आपका इशू है, उसमें 550 करोड़ तो ऑफर फॉर सेल ही है और बाकी फ्रेश इशू में 320 करोड़ ही आ रहे हैं। तो पहले तो बताएं कि इतना बड़ा ऑफर फॉर सेल कंपोनेंट है, कौन कौन अपने शेयर्स बेच रहा है, कोई खास वजह जिसकी वजह से थोड़ा एग्जिट हो रहा है, किस हिसाब से होगा ये, और फिर बिजनेस के लिए सिर्फ 320 करोड़ काफी रहेगा आपके फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए? Okay, maybe I will take this answer. In terms of first on the rationale for the IPO, we are seeing a good momentum in terms of the growth, and we want to make sure our growth is fully funded. We've been growing at 10 to 15% in terms of growth. We are a profitable company and we can fund ourselves. Anything beyond that point, we will look at funding, external funding, and that is the reason for getting external funding in terms of the growth. And with this money, we believe we should be funded, fully funded for growth for the next 3 years. In terms of OFS, till now it's been a bootstrap company, essentially 5 shareholders, out of which 2 of them are promoters and 3 of them are financial investors. And the financial investors are looking to divest about 50% of the share, and promoters today are holding about 75% of the share. Their shareholding will be about 50%, and altogether existing shareholders will be holding
somewhere around 60 to 65% depending on the final price. So that's the overall in terms of the IPO rationale and the size what they're looking at. So, sir, जो बाकी शेयर होल्डर्स हैं वो पूरी एग्जिट नहीं कर रहे हैं, they will still remain part of the company. Absolutely, they have still another 15%. So overall, all the existing shareholders continue to remain as shareholders. They have been in this company for last 20 years, invested, and it's been a bootstrap company. They are looking at divesting a part of their holding. Okay. बिचा साहब, आगे का आउटलुक क्या है ऑर्डर्स देख के, क्योंकि आपकी ऑर्डर विन अच्छी रही, आपकी ऑर्डर बुक अच्छी तरह से ग्रो कर रही है, अब आगे किस तरह से ग्रोथ के लिए कंपनी सेट है, क्या टारगेट्स आप इंटरनली सेट कर रहे हैं, लेट्स से नेक्स्ट 3 years 5 years के लिए? So next 3 to 5 years, we are very confident of being north of 30% in growth, if not much more. We have been very conservative in what we are doing, and the orders are there, and more coming in. The global majors have tied up with us to start manufacturing in India, both for export and for supply into India. So we are very confident of the future. सर, एक सवाल था, क्योंकि थोड़ा क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन व्यू आता है, टॉप 5 क्लाइंट्स की तरफ से करीब 37% रेवेन्यू आता है, तो इसको आगे डाइवर्सिफाई करने के कुछ प्लान्स है सर? Absolutely. So that number will change in the coming years, and we would see more diversification. Even today, with the growth in one sector being extreme, we're trying to get the other sectors to pick up to meet the demand. But as of today, we are diversified, but we'll further diversify as going forward. As one of the key strategies of the company is to have a very diverse customer base. So when markets go up and down, we are not affected as much. Okay. सुब्रमण्यन सर, रेवेन्यू ग्रोथ काफी अच्छी रही है कंपनी की तरफ से, हालांकि अब हम देख रहे हैं कि थोड़ा ऊपर पर टॉप आउट के संकेत आ रहे हैं। FY22 में आई थिंक 840 करोड़ के थे, इस साल 8 महीने के जो हमारे डेटा हैं वो 590 करोड़ के आसपास आते हैं, तो थोड़ा ऑलमोस्ट सिमिलर बेसिस पर ही होगा। आगे रेवेन्यू ग्रोथ को लेकर क्या प्रोजेक्शन है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली मार्जिन सर, आपके मार्जिन काफी हेल्दी है, इनफैक्ट 10% से या बढ़कर 11.6% के दिख रहे हैं। इस बिजनेस में क्या ये सस्टेनेबल है, क्योंकि आपके पीयर्स के अगर मार्जिन देखें तो वो तो सिंगल डिजिट रेंज में रहते हैं? There are 2 points. First is when we look at the growth rates in terms of the revenue, the key point to look at is there's a huge geopolitics which is playing out in the market, and the global corporations, which are our key customers, are reacting to it in a very different way. Some of them are looking at moving beyond China and China plus one. Some of them are looking to move closer to close shoring or offshoring or near shoring, whichever suits them. So we having facilities both in US and India are nicely placed to look at and exploit this opportunity, and that is what is happening with the whole industry in terms of ability to respond to that and the growth. So we are very confident of the growth. We are already seeing enough traction in terms of customer visits, audit, etc. Based on that, we can definitely say we will be matching the industry standards or growing much beyond in terms of the revenue growth. That's about the revenue growth. In terms of the margins will speak for itself. We always be in a profitable and healthy margins with the current industry growth rate. If in terms of future, if it looks much better, we will have the operating leverage issue also playing out, and the margins can go northwards, but that's more in terms of the future. So we are very confident of maintaining these margins and moving forward. चलिए, तो बढ़िया, मार्जिन्स भी मेंटेन रहेंगे, आगे के ग्रोथ आउटलुक भी अच्छा है, और जैसा बिचा साहब कह रहे हैं थोड़ा रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन भी कंपनी लाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया बिचा साहब आपका, और सुब्रमण्यन साहब आपका भी, आज जी बिजनेस को अपना वक्त देने के लिए और कंपनी के बारे में बताने के लिए। IPO 3 से 6 अप्रैल के बीच खुल रहा है, एवलॉन टेक्नोलॉजीज, इस पर रखनी है नजर, और बेस्ट ऑफ लक आप दोनों को इस नए इशू के लिए, और आशा करते हैं कि कैपिटल मार्केट्स में आपकी लंबी पारी रहेगी। तो ये है आने वाला नया IPO। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये नया IPO जो अगले हफ्ते खुल रहा है, FY24 का पहला IPO बाजार में आने की तैयारी में।